Okay, so the topic for today is discover the ultimate genius, and we'll try to understand whether this universe came about from an intelligent creator or it is just came out of chance, as the Big Bang theory says. As the Big Bang theory says, it's a blast happened and a lot of things happened, and then this world came about, this consciousness came about. You and me sitting here discussing about things, all the emotions that we have, that just came about from matter. So is it so, or there is some other alternative theory also there in our Vedic scriptures about an intelligent creator who have built this whole universe? So what is the truth that we'll try to uncover? Okay. So let's move ahead. Okay. So first of all, in essence, we will cover what do we observe, our observations, right? Then we'll see scientist observations. Well, we are trying to uncover and discover who is the mastermind behind this mysterious universe, right? Because that is the $1,000,000 question that we try to ask. कि ठीक है बनाया किसने ये सब कुछ, इतना सारे कॉम्प्लेक्स चीज है। तो साइंटिस्ट बोलते हैं कि ठीक है बिग बैंग आया, हमें कुछ और लगता है, हमने कहीं और से सुना है कि ठीक है ब्रह्मा विष्णु महेश है। सो व्हाट इज द reality that we'll try to uncover at a level, and is there someone who is behind this universe, or there is मतलब ऐसे ही आ गया बस आ गया मतलब चीजें, it just came out of chance? Is that so, or there is an intelligent creator? That we'll try to understand. So we'll try from our observations, then we'll see scientists observation, some of the greatest scientists in the history. Then we'll ask you quiz of $2,000,000 questions. We'll play a KBC, and then there is an activity time, and then we'll understand our prime duty. Okay, so in an essence, in this session we'll uncover and discover. By observing the world around us scientifically, we can see the hand of a supreme intelligent designer. अब वो कौन है उसको बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, maybe in the further session, but this is the summum and bonum that we'll try to discover around. Okay, and we'll try to prove this thing by the end of the session. Okay, so be attentive and be very engaging. You can probably ask any questions if you have in the middle also. Okay. So by observing the systematic harmonious universe around us, we get many questions, right? What how many of you in the audience had this question ki there is some, well, what do you think, according to you, what is that? So right, we can see that there are so many things happening in the nature around us, and everything has its purpose. There is this sunshine every day. अगर एक दिन sunshine नहीं होगा, एक दिन अगर sun rays नहीं आएगा, you won't imagine that how much havoc this whole world would have. You would have tsunamis everywhere if there would be no sunshine one single day. There is this flower blossoming, everything, there is the spring season, summer season, winter season, so many different things. This whole earth-like structure, this big globe, is moving around among so many different planets, and there is no traffic system out there. There is no traffic lights, there is no traffic policemen, but no one is colliding into one another, and we are safe. And इतना बड़ा गोला आप सोच रहे हो कि ऐसे हवा में घूम रहा है, और वो ऐसे भी घूम रहा है diagonally. That is why day and night happens, and then it is moving around the whole orbit also, according to which seasons happen. So there are so many different minerals that you get at the mountains. Gold mines होते हैं, diamond होता है, coal होता है. There is this whole evaporation thing happening. मतलब otherwise you would have to drink salty water, but there is so wonderful system in the nature that वो salty water को sweet water में convert करने के लिए, that gets evaporated, then through the clouds you get the rain, and then you store that and you can drink that. वो सेम सॉल्टी वाटर है, हम उसको ऐसा सिस्टम नहीं बना पाए आज तक जो सॉल्टी वाटर को डायरेक्टली पीने लायक पानी बना पाए, which you can directly use, and that is why this famine is happening, right? If you could have done that, but nature में वो system already है wherein you have this whole evaporation cycle and everything, right? So we can understand that
there are so many complex things out there, and we haven't created that, right? We haven't, मतलब कोई जाके बैठ के उसको बनाया नहीं है, right? But these things are happening automatically in each and every day. So अगर कोई भी इंटेलिजेंट इंसान होगा तो सोचेगा कि यार बस बाई चांस कैसे हो सकता है ये सारी चीजें. It should have a purpose, right? So that is what we are trying to understand. So Srila Prabhupada, who is the founder of ISKCON, and Bhagavad Gita as it is book, which is world famous. So he was talking to his disciples, and there was two houses. One house was a broken house, and one was a well-maintained house. So he asked his disciples that one house is. So what do you think? What is the reason that one house is broken and one house is so well maintained? So his disciple answered that one house is lively and it has a resident, and other is a dead. It doesn't have a resident, right? So basically, there is a maintainer there, and that is why that house is maintained. If there is no maintainer, मतलब अगर आप अपने घर को छोड़ के चले जाओ और 6 महीने के लिए कहीं घूमने के लिए, तो आपका घर भूत बंगला बन जाएगा, मतलब पूरा डस्ट से आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा. If you don't do regular cleaning, right? You can see that. So which means that you need a maintainer to maintain the house. Otherwise, अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे सालों साल, इतने करोड़ों साल तक अगर यूनिवर्स को ऐसे छोड़ दोगे without any maintainer, what would happen? राइट? ये सारे सिस्टम्स किसने बनाए, और वो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं नहीं वर्क कर रहे. एक दिन अगर सूरज नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा, मतलब हालत खराब हो जाएगी सबकी, राइट? मतलब एक सेकंड में सूरज, द सन गिव्स सो मच एनर्जी दैट इट इज इनफ फॉर द होल ह्यूमैनिटी. अब तक जितना भी एनर्जी हमने प्रोड्यूस किया है. सो वी कैन नॉट इमेजिन एंड understand with our brain that how much things we are getting just for like that in the nature, but we are not very grateful कि पीछे उसके कुछ होगा. So similarly you can see that there are अगर आप एक प्लेट है उसके ऊपर आप आयरन फाइलिंग्स रखोगे ऊपर और नीचे मैग्नेट लगाओगे, राइट? और अगर उस मैग्नेट से आप इधर उधर करोगे तो आयरन फाइलिंग्स इधर उधर होगी. सो अगर आप कोई ऊपर से देखेगा तो उसको नहीं लगेगा कि ठीक है ऊपर से कुछ हो रहा है, बट अगर मतलब थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे या आपको थोड़ा सा मतलब पता है मैग्नेटिज्म के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि नीचे से कोई मैग्नेट हिला रहा है. दैट इज व्हाई आयरन फाइलिंग्स आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर, राइट? ऑल्सो अगर लेट्स सपोज एक चाइल्ड है, इफ ही सीज अ प्लेन एरोप्लेन इन द एयर, वो अपने पापा को बोलेगा कि पापा ये तो कैसे उड़ रहा है ये बर्ड अपने आप. बट उसके पापा बोलेंगे नहीं बेटा, उसके अंदर एक पायलट है दैट इज ड्राइविंग दैट पर्टिकुलर प्लेन, राइट? सो इफ यू डोंट मतलब that comes with maturity, right? And that comes when we ask questions and then when we are inquisitive. So similarly we have to be inquisitive about this whole ये universe कैसे आया, क्यों आया, what is the purpose, who have created this universe. If we understand that, a lot of things in our life would be sorted out in so easy way. अगर let's suppose एक और example है एक puppet का, कि puppet अगर कोई देखेगा puppet show तो एक child को लगेगा ठीक है puppet अपने आप चल रहा है ऐसे, मतलब कठपुतली ऐसी चल रही है. But there is a puppeteer behind that, right? That is why those puppets are moving, right? And we'll try to find out that hidden person, right? Who is that? And probably try to uncover that. Okay, so let us go ahead. So we'll try to understand this. Does this God exist? Which is a $1 million question that people, scientists are still struggling to find out. We'll try to uncover by different means, so that there are different philosophies around there are different approaches to kind of establish the existence and non-existence of God. Is there is there an intelligent designer behind this universe, or this universe is just a lump of matter and it is just going on and on just like that, right? So there is teleological approach, there is cosmological approach, there is ontological approach, there is epistemological approach. So there are different approaches by which scientists and different philosophers are trying to uncover and discover whether what is truth. So one is metaphysical way mein we try to understand what is the
ontology मतलब try to understand what is the question of existence and being, मतलब उस तरीके के questions पूछना. And then there is cosmological approach. तो cosmological approach में क्या होता है कि मतलब जैसे कि आपके पप्पा है, राइट, फिर उनके पप्पा अपने दादा को देखा होगा, आपने ज्यादा से ज्यादा दादा के पप्पा को देखा होगा, बट अगर दादा के दादा की बात करूं मैं तो आपने शायद नहीं देखा होगा, बट यू वुड बाय डिफॉल्ट अंडरस्टैंड दैट कि दादा के दादा होंगे, राइट. इफ देर इज मतलब आपके पप्पा है, पप्पा के दादा को आपने देखा है, तो दादा के दादा भी होंगे एंड दैट इज अ लिविंग पर्सन, राइट. आप ये अज्यूम नहीं करोगे कि जस्ट केम आउट ऑफ अ बिग बैंग एंड ब्लास्ट हुआ और मैटर से हम मतलब कितना भी आप इन्फिनिटली ऊपर जाते जाओ, बट यू वुड नॉट, इफ यू मतलब थोड़ा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो मैटर से नहीं आया होगा, राइट. मतलब दैट बाय डिफॉल्ट वी कैन अंडरस्टैंड, बट व्हेन वी हियर अबाउट दिस बिग बैंग थ्योरी देन वी डोंट क्वेश्चन रियली कि यार ठीक है ऐसे हुआ होगा या नहीं हुआ होगा. हमें जो पढ़ाया था बुक में हमने बस उसको मतलब आग बन करके मान लिया. वी नेवर क्वेश्चन दैट टाइम टू आवर टीचर्स कि यार मैटर से कैसे आ सकता है. आज तक कोई मैटर से अगर लाइफ नहीं आया है, सो हाउ कम लाइफ कम फ्रॉम मैटर, बिकॉज वी हैव सीन एवरीथिंग इन द नेचर, लाइफ इज कमिंग फ्रॉम लाइफ ओनली, राइट. सो एक कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है कि ठीक है एक बॉम्ब फटा दिवाली में और बिग बैंग हुआ और कुछ अच्छा क्रिएशन हो गया जहाँ पे इतना अच्छे से सिस्टम्स है सारी वी हैवंट सीन एनीथिंग, बट वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन द नेचर दैट आप बीमार पड़ते हो. क्यों? क्योंकि आपके अंदर वायरसेस आते हैं तो आपको रेजिस्ट करने के लिए वो उस तरीके का पूरा सिस्टम बना है सो दैट आप ज्यादा खराब ना हो जाए आपकी हालत. दैट इज वाई दैट सिस्टम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बीमार पड़ने वाली. सो सारी चीजें भगवान ने इतना डिफरेंटली इतना इतना पर्पसफुली डिजाइन किया हुआ है, right. This whole evaporation system that we talked about and everything is so well established and so wonderfully designed, right. So we can understand by this कि everything in this universe has a design and it is designed with a purpose. ऐसा ही नहीं बन के आ गया मतलब just without any reason, right. So let's start with it. So have you ever questioned that who created this, who creates and maintains the beautiful and harmonious universe, right. So what is our observation? We'll try to understand. So there are this A, B, C, D, E and F, right. So we'll try to see on this 5 levels, 6 levels, our observations that we see around, right. We talked about some of the things in the till now, but we'll try to see one by one. Okay. So artistry, if there is an art, you will automatically say that कि यार ठीक है इसके पीछे एक artist होगा. For example, if you see this paintings, you will by default say कि ठीक है मोनालिसा को किसने बनाया था, लियोनार्डो डा विंची ने बनाया था, राइट. सो यू विल अल्टीमेटली मतलब आप क्वेश्चन करोगे ठीक है इसको किसने बनाया, ये जो पेंटिंग इतना बढ़िया लग रहा है इसको किसने बनाया. मतलब you would by default understand that there is a painter or there is an artist behind the art, right. For everything that you see, for every art that you see, there is an artist behind that. So this was made by Leonardo da Vinci, this was made by Vaughan, and there are different paintings made by different artists. So if we go in the nature and हम ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि जो ये सारी चीजें हैं, this all came out of just by chance. There is no some intelligent creator behind, or there is no intelligent artist behind this wonderful art pieces that we see. There are so many beautiful human beings, there are so many different wonderful landscapes, waterfalls, different flowers, so many things in the nature. आप अगर नेशनल ज्योग्राफी बचपन में देखते तो कितनी सारी चीजें थी जो मतलब माइंड बॉगलिंग चीजें होती थी जो हम देखते थे, राइट. देन हाउ कैन वी से दैट ऑल दिस आर्ट व्हिच इज प्रेजेंट इन द नेचर एक ऐसे ही आ गया, बस एक बॉम्ब फटा और आ गया, मतलब दैट इज सो मतलब कितना डिफिकल्ट है मतलब इसको मतलब डाइजेस्ट करना, राइट. सो हु इज द आर्टिस्ट? To make an artificial rose also, we need all these things, right. We need raw paper, we need fevistick, we need scissors and everything.
and then we combine to make a, you know, a rose, a paper rose. तो अगर पेपर रोज जिसके अंदर फ्रेग्रेंस भी नहीं है और उसको इतना मेहनत से बनाना पड़ता है, और उसको अब देखोगे, अगर आप एक आर्टिफिशियल रोज को देखोगे तो आप सोचोगे कि यार इसको कितना मस्त बनाया, किसने बनाया ये, यू विल थिंक अबाउट इट. बट व्हेन वी सी अ रियल रोज, डू वी थिंक दैट हु हैव मेड इट, वो क्रिएटर कितना दिमाग वाला होगा, कितना आर्टिस्ट्री होगा उसके अंदर, बनाने वाले के अंदर, राइट? अगर आप, there are so many different petals of flowers and everything which you see, there are so many different things. If you closely observe nature, you would obviously say यार ये जो बनाने वाला है वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है, right? So what to speak of flowers in nature with their delicate biological complexity, fragrance, and their shapes and forms. So when there is an art, it implies there is an artist, right? So we saw about the, you know, nature में there is so many different you know, artists, art things. तो किसी ना किसी ने तो बनाया होगा. We'll see a short video. Let me know if you don't not able to hear it. These are It's not audible. Yeah, there's no audio to it. One second, I'll just play so we again. can see her better. Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. So we can see that, you know, मतलब bees, they are so much organized. अगर आप अपने थर्ड ईयर में आप लोग, अगर किसी फोर्थ ईयर में मशीन लर्निंग पढ़ोगे आप लोग, या फिर किसी लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो देयर इज एंट कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग में. सो एंट से भी हम कितना कुछ सीख सकते हैं. वी कैन यू नो learn so much things from honey. We can learn so much things from a dolphin, जिसके अंदर सोनार होता है और दूर दूर तक उसको पता चल जाता है कि who is coming here. So we can see that so many different organizations and systems are, you know, present there in the universe. How can all this thing come just out of chance? मतलब हम बोलते हैं कि इनको दिमाग नहीं होता, कैसे होता है? अगर दिमाग नहीं होता तो फिर ये, you know, कैसे जाके अलग अलग वो वाले फ्लावर्स पे जाती जहाँ पे शहद है, और उसको लेके यहाँ पे आएगी परफेक्टली. जीपीएस सिस्टम है नहीं उनके पास, गूगल मैप्स है नहीं उनके पास, फिर भी वो बराबर से उसी छत पे आएगी इतना दूर से, चाहे जितना भी दूर चले जाए. सो इफ यू हैव, यू नो, अप्लाई सम ब्रेन, वी विल अंडरस्टैंड दैट, यू नो, ऑल दिस थिंग्स हैव आल्सो कॉन्शियसनेस, एंड यू नो कितना ऑर्गेनाइज करके बनाया है जिसने बनाया है, राइट? Bees are called social insects because they work together. Mathematician spiders. Thousands of This is about spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters.
which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web, like an engineer. Otherwise, the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave, right? So we saw that spider. What does it do? मतलब उसके मतलब अगर ह्यूमन से कंपेयर करें, it creates a 50-story scraper in a day, in an hour time. अगर if we compare draw parallels with a human being, अगर जितना छोटा एक स्पाइडर होता है उतना छोटा अगर इंसान हो और जितना बड़ा वो वेब बनाता है उसके मुकाबले, that is a 50-story building which he creates in an hour time. अगर दिमाग नहीं होगा, मेहनत नहीं होगा तो कैसे होगा? मतलब इतना ऑर्गेनाइज्ड मैनर में how is it is capable to do that? Who is giving that intelligence? राइट? मतलब बॉम्ब फटा और अचानक से ऐसा स्पाइडर निकला और जो इतना सब कुछ कर सकता है, मतलब that is very difficult to digest, you know? So yeah, so B say there is a beautiful organizer who have organized such things which is there in the nature, right? We'll move thoda fast move karenge because we have to cover a lot of things. So if you have anything in the middle, you can probably stop me and probably ask the questions. So likewise, we can see wonderful things created by man also. We see, sleek cars, we see trendy computers that is assembled by someone, right? We see, amazing Rado or Omega watches, elegant watches. So we say that, someone has created it. Someone has designed this particular thing. When we see, Taj Mahal or probably some fort or, Kailash temple or, Paris में Eiffel Tower, we say कि यार किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, इंसान ने बनाया होगा, right? So someone has erected it. When we say twin towers, skyscraper buildings, someone has built it, right? Wonderful sculptures, someone has carved it. You can see so many different sculptures when you visit some forts out there, right? So shouldn't this universe have the super intelligence creator too? मतलब अगर हम छोटी छोटी सिंपल चीजें अगर हम देखा जाए, उसको देख के हम बोलते हैं कि यार there is a creator behind that particular small things. So don't you think that probably we will have wonderful creator also for this whole universe, which is so complex in nature? So if there is a creation, it implies automatically that there is a creator, right? Right. So this is a sequoia seed, which is so small, so tiny. It is almost 1.5 inch small. But when it is sown into the ground, a very big tree comes in. And if you see the most largest sequoia tree, मतलब जो सबसे बड़ा पेड़ है पूरी दुनिया में, that is a sequoia tree, and that is about 84 meters or 270 feet high. You can see this particular person. It is so small, so he's so tiny in front of this particular in front of this tree. So the giant tree is packaged in a tiny seed. So basically you can see यार पूरा जो intelligence था
उस सीड के अंदर था, मतलब पूरा इतना बड़ा ट्री का पूरा पोटेंशियल था उसके अंदर कि किस तरीके से रूट्स होंगे, कितना बड़ा वो बनेगा। मतलब आपको बस पानी डालना है। ये सारा रॉ मटेरियल्स नहीं था उसके अंदर, लकड़ी नहीं थी उसके अंदर, राइट, वो पेड़ फल नहीं थे उसके अंदर। बट सोचो कि बनाने वाले ने कैसे बनाया है कि इतने छोटे से सीड से यू आर गेटिंग आम का पेड़, यू आर गेटिंग डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, यू आर गेटिंग, एंड द रॉ मटेरियल्स इज नॉट इनसाइड दैट। आप कोई भी ऐसी चीज बता दो जो हमने बनाई है जिस जो ऐसा हो। कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग लाइक दैट? We need, so whatever we build, we take the raw materials and we build it, right? If we build a robot also, we take the raw materials like silicon, हम GPU के लिए ये चीजें लेते हैं, हम iron लेते हैं, हम ये लेते हैं, वो लेते हैं। If you are building a house, then also we are taking bricks, cement from the nature and then we are building it. But just understand how the things are there in the nature that automatically it is just creating, मतलब सारा intelligence उसके अंदर है कि how do you create, एंड देन उस पेड़ से फल वापस नीचे गिरता है, वापस एक दूसरा पेड़ खड़ा हो जाता है, एंड दैट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन फॉर एवर, एंड दैट इज व्हाई यू सी सो मेनी डेंस फॉरेस्ट आउट देयर. So wonderfully designed things are there by the creator, right? If we apply our brain, we can see so much symphony or so much, wonderful things around us that we are not grateful for, but someone has carved it out, someone has built it, someone has applied his brain to make it, right? So if you see the sequoia tree, it is just about the size of a Statue of Liberty. And all this thing was there in a small seed, which is, half an inch of a seed. So we talked about a creator. Now we'll talk about a designer. So creation implies there is a creator. So if you see our Intel processor, or if you see, so the human brain can store more than information that all the libraries in the world. This is said by Dr. Richard Ristock. I think ये सबने सुना होगा, है ना? कि हमारा जो brain है, that can store this much information. Obviously processing उस तरीके से नहीं होगी, but it can store that much information. That is the potential of a brain. But who has designed this? Well, all the libraries of the world can fit into a brain, just a single person's brain. So we'll see a short video. Right, so we can see there are हमारा जो brain है, it is so wonderfully designed. You saw different things कि how much information it is stored, how much thoughts does come in a, कितना speed से भागता है मन की गति. We know कि ये कितना fast हम सोच लेते हैं. हम यहाँ से, if I say America, you will be in America, you'll think about America. मतलब हम कितना fast चीज़ों को यहाँ process कर पाते हैं. It doesn't have to be trained in that way, and we are able to process so many different things. So how wonderfully, we have made the whole AI thing which we have built is all inspired by our brain, our neurons, and this whole neural network and deep learning and machine learning and all this field are coming just by taking inspiration of the brain. So जो reality में जिसने बनाया होगा इस पूरे artificial intelligence का real intelligence जिसने बनाया होगा, उसके पास कितना दिमाग होगा, क्योंकि हम तो उसको मिमिक कर रहे हैं, उसको ट्राई कर रहे हैं कॉपी करने का. बट सोचो जो जिस इंसान ने उसको रियलिटी में बनाया होगा वो कितना दिमाग वाला होगा, right? We'll go ahead. So let's go down to the micro world. So this was, अब थोड़ा सा micro world में भी देखेंगे चीजों को microscopic level पे. So the DNA, the molecule of life, right? So there are trillions of cells, trillions of DNA in us.
राइट 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 20 मीटर्स ऑफ डीएनए होता है, 3 बिलियन डीएनए सब यूनिट्स होते हैं एटीसीजी के, और ये डीएनए से ही, ये जीन से ही ऑल द ट्रेट्स दैट इज कमिंग फ्रॉम योर फादर्स फादर, फादर का फादर, मतलब वो पूरा आपका जो पूरा जीन आता है वो उस तरीके से आता है। मतलब इतना अच्छा ट्रांसफरिंग सिस्टम है और इतना कॉम्प्लेक्स, मतलब हम काफी सारी जो मेमोरी कार्ड्स बनाते हैं वो सारी चीजों को भी हमने काफी इंस्पिरेशन लिया इन सारी चीजों से, राइट। सो ब्रेवियस लैटिस स्ट्रक्चर, सो वी हैव अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने ये सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा होगा, about different molecules, right? Triclinic, hexagonal, body centered, hexagonal, rom, so मतलब different टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे the whole property of that particular element is defined. For example, अगर आप ग्राफाइट को देखोगे, that is also made from carbon, but that is brittle in nature, right? उसको मतलब आप easily तोड़ सकते हो, पेंसिल भी ग्राफाइट होता है, right? That is very brittle, you can directly make it into powder. But on the other hand, अगर आप slight molecular change कर दोगे, जो हमने पीछे बात किया उसके बारे में, so वो diamond बन जाएगा, and diamond is the hardest object, diamond ही diamond को काट सकता है. So there was a slight change in the molecular structure only, not in terms of the structure of the raw material also. Raw material यहाँ पे carbon ही है दोनों, but थोड़ा सा structure change होगा जिसकी वजह से एक brittle है जिसको आप पाउडर में अपने हाथ से तोड़ सकते हो, और एक है कि जिसको आप किसी भी मशीन से भी नहीं तोड़ सकते, ना लोहे से काट सकते हो ना किसी चीज से काट सकते हो, क्योंकि डायमंड ही डायमंड को काट सकता है. सो दैट इज द थिंग, मतलब कि अंडरस्टैंडिंग दैट जो बनाया है जिस बंदे ने, जिस इंसान ने, कितना दिमाग से बनाया होगा ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन नेचर दैट वी डोंट क्वेश्चन, कि मतलब ठीक है हमने इतना केमिस्ट्री पढ़ा, इतना फिजिक्स पढ़ा, बट हाउ मेनी टाइम्स हैव वी क्वेश्चनड इन द 12th स्टैंडर्ड कि यार इसको बनाने वाला कितना दिमाग वाला होगा. हम इसको तो बस पढ़ रहे हैं, पढ़ने में हालत खराब हो रही है हमारी, पेपर निकालने में हालत खराब हो रही है, बट जिस बंदे ने बनाया होगा, कितनी सारी चीजें तो हमें पता भी नहीं है, अभी हमने डिस्कवर भी नहीं किया, वो अलग है. हमने जो डिस्कवर किया वही पढ़ने में हालत खराब हो रही है, बट उसके ऊपर लोग एक एक चीजों के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं. पीएचडी कर रहे हैं मतलब उसके अंदर कुछ नया ढूंढ रहे हैं, विच मीन्स कि कुछ नया चीज है जो हमें नहीं पता था पहले, वो पता चला है, विच मीन्स हम रोज नई चीजें पता कर रहे हैं. So there are so many things which we don't know right now also, because in future also PhD would happen, which means कुछ ना कुछ नया रिसर्च हो रहा होगा. और रिसर्च का मतलब रिसर्च, कुछ चीज ऑलरेडी है उसको रिसर्च करना, उसको वापस से ढूंढना, विच मीन्स वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है. तो हम तो बस ढूंढ रहे हैं, सोचो बनाने वाले ने कितने दिमाग से बनाया होगा. हम ढूंढ के बहुत उसको थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह दे देते हैं, थोड़ा डायग्राम बना देते हैं, तो हमें लगता है कि हमें बहुत दिमाग है, हम बहुत साइंटिस्ट हो गए. बट सोचो कि why we are not grateful for the person who have created that thing. ठीक है, अगर लैपटॉप को हम देख के हम खुश हो जाएंगे कि यार ठीक है स्टीव जॉब्स ने क्या सोचा था, क्या बनाया है, मतलब क्या एलिगेंट है, बट मतलब सोच रहे ना कि स्टीव जॉब्स ने क्या बनाया था, हमने ऐसे तो फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे कि मैकबुक बन गया यार बढ़िया है, ठीक है, राइट. सो मेटिकुलस डिजाइन इन दिस माइक्रो वर्ल्ड. सो कितना मेटिकुलसली डिजाइंड है पूरा माइक्रो वर्ल्ड ऑल्सो. मैक्रो वर्ल्ड भी है और माइक्रो वर्ल्ड भी है, मतलब आप डीपर लेवल पे जाओगे तो भी है और ऊपर लेवल पे जाओगे तो भी है, स्पेस एंड टाइम के लेवल पे जाओगे तो भी है, राइट. सो 24 अराउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग चलता है. अगर आप कोई भी एक सैटेलाइट लॉन्च करते हो तो पूरी एक टीम बैठती है इसरो में. मंगलयान जब गया था तो आपने, अगर किसी ने मूवी भी देखी हो, वो अभी जो आई थी अक्षय कुमार की रिसेंटली, so there is this whole team which is sitting to launch, और उसके ऊपर कितना मेहनत चलता है, कितने सालों सालों का मेहनत चलता है. And Earth is also a planet or satellite in a way, right? So we'll draw parallels, right? So अगर आप देखोगे कि we need to understand about the critical parameters to monitor, like orientation क्या है सैटेलाइट का, स्पिन कितना हो रहा है, वेलोसिटी कितना है, ऑर्बिट डिके करेक्शन कितना है, कॉस्मिक रेडिएशन कितना उसके ऊपर आ रहा है, हीट डिसिपेशन कितना हो रहा है, अर्थ टू सैटेलाइट डिस्टेंस कितना है. We need to know all these factors, और इसके अंदर और डिटेल होता है, मतलब ये तो बस ब्रॉड है, बट इसके अंदर कितना डिटेल होता है जिसके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं, लोग पूरा समझते हैं, सीखते हैं एस्ट्रोनॉमी में, और या फिर जो भी इस स्पेस वाले एरिना में होता है. एंड देयर आर सो मेनी पीपल देयर हु आर वर्किंग एंड दे हैव डिफरेंट जॉब रोल्स टू लुक एट डिफरेंट थिंग्स इन अ डेप्थ मैनर. क्या ठीक है, अभी वो जो सैटेलाइट गया है उसका वेलोसिटी क्या है, उसके ऊपर पूरी एक टीम है, उसका हीट डिसिपेशन कितना और उसके ऊपर पूरी टीम है. सो अगर एक छोटा सा सैटेलाइट जो हम भेज रहे हैं उसके लिए इतनी सारी बड़ी टीम लग रही है, आप सोचो कि इतना बड़ा पूरा अर्थ है जो बढ़िया से घूम रहा है,
that is 6 into 10 raised to power 21 metric tons. इतना बड़ा एक अर्थ है, राइट? एक इतना बड़ा गोला है, मतलब आप राइट. सो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो गोला है इसको कोई मॉनिटर नहीं कर रहा होगा, ये अपने आप ऐसे ही मजे में घूम रहा है और कभी टकरा नहीं रहा किसी और से, और अर्थ के अंदर घुस भी नहीं जा रहा, राइट? So speed around the earth, it is maintaining as 1 lakh something kilometer per hour, right? So there is this whole thing, मतलब डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, काफी टाइम नहीं है, but yeah. So who is in control of all these things? मतलब never a different planet. मतलब आपको पता है कि जो प्लूटो था, that was not the 10th planet बोलते थे, right? But it was between Uranus and Neptune. That a lot of people don't know about. बट फिर भी वो कभी कोलाइड नहीं किया उसके ऑर्बिट में, राइट? सो हु इज कंट्रोलिंग? नासा तो कंट्रोल नहीं कर रहा, या इसरो तो कंट्रोल नहीं कर रहा, राइट? ऑल दिस सैटेलाइट्स. सो हु इज कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स? हम तो बस उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं. सैटर्न में कितने हैं, मार्स में कैसे है, क्या है, यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग इट. सोचो जिसने बनाया होगा कितने दिमाग से बनाया, राइट? सो मार्वेलस डिजाइन इन द नेचर दैट वी कैन सी. फिबोनाची सीरीज, इसके ऊपर हम शॉर्ट वीडियो एक बार जस्ट देखेंगे. Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with the length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same. As currents move through the ocean, and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. So what did you understand? So that is the benefit of coming to such classes, because you get a perspective to see not just the spirituality gives you a lot of things. It gives you a perspective towards looking at nature, looking at things from a very different perspective that you have never seen before, towards life, towards the purpose of creation. Because when you be with such people who have tried to understand all these things from the scriptures, and like people have given so many different things around these things, तो जब वो सारा हम अनकवर करने का ट्राई करेंगे तो काफी सारी चीजें सीखने मिलेगी, right? So we have a lot of things. So I'll just Around go fast. Around 1200 AD.
So design implies that there is a designer, right? Now, for E we have energy. So if there is some energy, it implies that there is an energetic person also. मतलब अगर आप ऐसा समझो कि आपको एक पत्थर कहीं से आया लग के किसी ने फेंका, तो आपको ये पता होगा ना कि किसी ने तो फेंका है उसको. There is an energetic person who has probably thrown that stone, right? Otherwise वो कैसे लगेगा आपको, right? So energy implies that there is an energetic, right? So this whole sun which we talk about is 99% of the total mass of the solar system. मतलब अर्थ तो उसके सामने कुछ भी नहीं है. मतलब अर्थ यू कैन सी लाइक अ डॉट इन फ्रंट ऑफ द होल सन. और सन से जो एनर्जी आता है, टेम्परेचर ऑफ द सन. So this some of the facts, small facts. अपने weight देखा सन का, which was like unfathomable to understand. So energy emitted by the sun per second is the amount of energy consumed by the human race throughout the entire history. और वो भी उससे ज़्यादा ही है. तो जितना एनर्जी सन एक सेकंड में इमिट कर देता है, उतना एनर्जी हमने पूरे ह्यूमैनिटी में भी अब तक कंज्यूम नहीं किया है. That is the level of energy that sun has. How many of you knew this fact before? मतलब we will be so grateful कि यार solar energy हमने पहले क्यों नहीं सोचा, right? Because there is so much energy yet to be tapped, and but we are using fossil fuels and whatnot, and spoiling the whole earth, and ozone layer deplete कर रहे हैं हम, pollution create कर रहे हैं. But अगर हमने थोड़ा सा रुक जाते हैं, हम जब गाड़ी आई थी तो पीछे से काला धुआं तो निकल रहा था, CO2 गैसेस तो आ ही रहे थे, राइट? बट हमने तब क्वेश्चन नहीं किया कि यार ठीक है तभी सोलर पैनल्स बना लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना लेते हैं. और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का भी चल रहा था साथ में, लेकिन कुछ लोगों के बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल्स कि यार मैंने वो क्रिएशन किया है और उसका मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो बिकॉज ऑफ सम पीपल्स ग्रीड वी आर सफरिंग टुडे, राइट? सो स्पिरिचुअलिटी का ये फायदा होता है कि वी डोंट वी हैव कंपैशन फॉर पीपल एंड वी डू द राइट थिंग्स फॉर द राइट पर्पस, but not do things for a selfish reason only, right? So we'll just go ahead. Not able to note answer. In 1 second, our sun produces enough energy to meet the current needs of the entire earth for 5 lakh years about. So 5 lakh years में हमें जितना भी एनर्जी चाहिए होगा वो 1 सेकंड में जो सन प्रोड्यूस करता है एनर्जी उससे सफाइस हो जाएगा. That is a very strange fact which you might not know about, right? So if a stone from your window hits your TV screen, you'll ask who supplied the energy to the stone. So behind energy there is always an energetic person, right? So then who is supplying the energy to the sun? If there is energy to that stone जिसने फेंका, तो इस सन को भी किसी ना किसी ने एनर्जी प्रोवाइड किया होगा ना. ऐसे तो नहीं आ गया उसके अंदर एनर्जी अचानक से, just by chance it came around. So energy implies there is an energetic, right? So look at the world around. You see, there is this law that आपको कॉलेज में इतने बजे आना है 9:30, or you have to do this thing, or you have to work. So there is a मतलब अगर कॉलेज में देखा जाए तो ये लॉ प्रिंसिपल ने बनाया है, right? So if you are in India, you have to keep left. If you are in USA, you have to keep right. So who has made the law? There is Indian traffic police, there is American traffic police who has made this law, right? So how many overs are there in the international? How many players will play? All these things, who have made the rule? The cricket body, the cricket council has made this rules. If there is this periodic table, right? So it is called as periodic law बोलते हैं हम लोग, right? It's a law. It is not
by chance. So chemical elements are arranged in the periodic law, and it's not by periodic chance. ऐसे ही नहीं मतलब it is not just by chance that all these elements are there. It is having a law, right? कि आपका पहले वाले में इतना ऑर्बिट होगा, सेकंड वाले में इतना एलिमेंट्स होंगे, लास्ट ऑर्बिट में, एंड एवरीथिंग. सो laws of physics also you can see. It मतलब there are so many laws in laws of physics, laws of optics, prism effect, so many things around, right? So you can see there are laws here and there, thermodynamics, whatever you have studied in science, there are so many different laws. So this precise laws of mathematical accuracy govern this world, the micro and the macro. So अगर कोई law है, there is a lawmaker for that. So who have made these laws, right? We should question that. So someone is born beautiful, someone is born ugly, someone is born handsome, someone is born non-handsome, someone is rich, someone is poor, someone is doctor, and someone is laborer. So who has decided कि यार ठीक है, जब आप पैदा होगे तो अंबानी के घर पे कौन पैदा होगा versus एक गांव में कौन पैदा होगा? Who is deciding that? How it is decided, right? We choose the education that we do, we choose the job that we do, we choose the bride that we marry with, we choose the car that we live in, we choose the apartment that we live in. But do we really choose our parents कि हम कहाँ पे born होंगे, या हमारा face cut कैसा होगा, या हमारा intelligence कितना मिलेगा, right? So who chooses and what basis? Is it by chance? ऐसे किसी को भी कितना भी दे दो, मतलब ऐसे किसी को भी अमीर बना दो, ऐसे किसी को भी गरीब बना दो. Is that the theory which we'll think about, or we'll think यार किसी ने अगर इतने सारा दिमाग लगा के फिजिकल लॉज में जो हमें देख पा रहे हैं हम लोग, उस चीजों के पीछे लॉज बनाए हैं, फिबोनाची सीरीज एग्जिस्ट करती है, थर्मोडायनेमिक्स एग्जिस्ट करता है, तो व्हाई नॉट ये सारी चीजों के ऊपर भी लॉज होंगे, और बनाने वाले ने उसके लिए भी लॉज बनाए होंगे, राइट? So if an intelligent person is there, he will think in that way. So we have got a lot of comments. I think someone whose research organization greater than ourselves. Yeah, so it is laws of karma, right? So laws of karma is a very complex thing. और वो अपने आप में एक पूरा topic है. But yeah, laws of karma is behind this. And if you read Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 31st chapter, 1st verse, so there's the shloka. I won't read the shloka, I'll just go to the translation. So under the supervision of Supreme Lord and according to the result of one's work, the soul is awarded a new body. So basically यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आप काम करोगे, basically laws of karma है, जिस तरीके से आप काम करोगे उसके हिसाब से आपको soul मिलेगा, next body मिलेगा, right? If you do such and such activities, you will get a life of such and such person, right? So this is Newton's third law, equal and opposite reaction, kind of, right? So if there is a law, there is a flawless lawmaker also out there. So what we saw is हमारे ऑब्जर्वेशन से हमने देखा ABCDEF. हमने सबसे पहले देखा कि if there is some artist art, there is an artistry, there is an artist who have built that. Then we saw B से हमने क्या देखा, there is a beautiful designer. And then we saw C से हमने देखा there is a creator. D से हमने देखा there is a I think there is a designer or something. Then we saw with E we saw, just forgot what was that. So E से हमने शायद देखा था, E से किसी को याद है हमने क्या देखा था? Energy. Energetic, right? किसने बोला? I said that. Okay, thank you. So yeah, I'll just reshare the slide. So we'll move ahead. हम यहाँ से थोड़ा फास्ट जाएंगे. हम थोड़ा सा साइंटिस्ट लोगों का देखेंगे. ये हमने खुद से एनालाइज किया हमारे ऑब्जर्वेशन से, whatever we did right now. Now we'll see some scientist observation also, right? So what are the scientists observing by nature? What are they saying? That we'll try to understand. So Albert Einstein, one of the most prominent scientists of all time, says the Lord God is subtle, but malicious he is not. मतलब he is in a way saying कि कुछ तो है, मतलब ऐसे ही
matlab, he's not malicious. He has, built it with some brain or something, right? So that is what he's trying to probably say. Then there is this Schrodinger, quantum physics अगर हमने पढ़ा है तो हमने सुना होगा एरविन स्ट्रोडिंजर के बारे में, right? So he says, I am not astonished that the scientific picture of the real world around me is very deficient. It gives you a lot of factual information put all over the experience in magnificently consistent order. But it is ghastly silent about all the sundry. Okay, someone would want to read from here in the audience. But fast. Anyone? Ritu, can you read? Okay, someone else can read. Abhishek? I'm very astonished of the real world around me is very deficient. It gives a lot of factual information, puts all our experience in a magnificently consistent order, but it ghastly silent about all the sunlight that is really near to our heart, that really matters to us. It cannot tell a word about red and blue, bitter and sweet, physical pain and physical delight. It knows nothing of beautiful and ugly, good or bad, God and eternity. Science sometimes pretends to answer questions in these domains, but the answers are very often so silly that we are not inclined to take them seriously. So in short, that you can see that he's trying to say that, there is some God in eternity. It cannot tell us a word about the red and blue, bitter or sweet, physical pain or physical delight. It knows nothing of beautiful and ugly. So science has not answers to a lot of things that he's trying to probably, communicate. Science sometimes pretends to answer questions in the domain where he is not supposed to be answering also. So in that things, we should not take it very seriously because it has limitations. Science is all about experimentation and, the creation which came about, the purpose and all these things. It cannot come with एक्सपेरिमेंटेशन. आप दो चीजों को, दो केमिकल्स को मिला के नहीं देख सकते कि ठीक है आप जो पूरा यूनिवर्स कैसे आया था. Because Big Bang, if you see by definition, up NASA के website पे भी I'll try to probably show you. We are short of time, otherwise I would have shown that. So there also you can see it is a lot of things are. So I'll just probably skip this and I'll just probably go there. matlab, if you think strongly enough, you will be forced by the science to believe in God. This is by Kelvin. So Fahrenheit, Kelvin, Celsius, ये सारा जो होता है ना, तो Lord Kelvin इनका नाम था. So he said that. Story of Isaac Newton, I'll probably skip this. In short, it was so Newton ने एक पूरा मॉडल बनाया था, वर्किंग मॉडल बनाया था पूरे यूनिवर्स का, and then he showed it to his friend, and then his friends told him that ये किसने बनाया. तो न्यूटन ने बोला इट जस्ट केम आउट ऑफ अ चांस, मतलब ऐसे ही बन गया, मैंने नहीं बनाया इसको, किसी ने मतलब ऐसे ही बनाया. सो उसके दोस्त बोल रहे हैं कि क्या यार क्या बना रहा है, मतलब ऐसे थोड़ी ना हो सकता है, मतलब किसी ना किसी तो बनाया होगा. सो ही सेड दैट कि अगर ये छोटा सा चीज जो आप देख रहे हो, आप इफ यू कैन नॉट थिंक दैट दिस स्मॉल थिंग, दिस स्मॉल नॉट सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज मेड बाय समवन, how can you think that a whole universe, with so many complexities, it is just made out of no intelligence, it just came it just came out of chance. So how can you think that? So that was the thing which Isaac Newton. So Big Bang wala jo theory, it came about in 1917, and that also will अगर आपने starting में video देखा था, जब हमने starting में starting session start किया था, so it was philosopher जिसने वो philosophize किया था, and there are a lot of so many scientists who are against that still. So yeah, the most beautiful system of the sun, planet, comets only proceed from the council domination of an intelligent, powerful being. This being governs all the things, not as the soul of the world, but the Lord overall. And on account of his dominion, he is to be called as Lord. So जो लोगों ने कुछ किया था ना जिंदगी में, और साइंस में एक अलग लेवल पे चीजें की थी. इस बंदे ने कैलकुलस दिया था, इस बंदे ने प्रिंसिपिया मैथमेटिका दिया था, उसमें पूरा फिजिक्स है जो हम पढ़ते हैं, राइट. जिन्होंने कुछ उखाड़ा था साइंस में, वो लोग बोलते हैं कि यार दे आर बिलीविंग इन गॉड. आइजैक न्यूटन, आइंस्टाइन, Kelvin, and Schrodinger, all these people believe in God because
they have saw कि यार science में बहुत सारे limitations है which we cannot answer, right? So they have become humble because they have seen the depth of things. A lot of scientists today, हमने अगर देखा जाए तो last 100 years में कुछ science में बहुत ज़्यादा एकदम significant नहीं हुआ है. Last at least 50 years में, not 100 years, last 50 years में. You can see technologically चीजें हुई हैं, but scientifically कुछ नया ground breaking नहीं आया है. Right? It was around Albert Einstein के time पे, उस time पे बहुत सारी चीजें थी, या न्यूटन के time पे, या quantum physics के time पे, श्रोडिंजर के time पे. But now you don't see a lot of groundbreaking things coming in. It is just improvement of some things. आप Nobel laureates को भी देखोगे last 20, 30, 40 years के, who are atheists, you will see कि they have not done something major. But जो लोगों ने कुछ उखाड़ा था, जो लोगों ने कुछ किया था, they are very humble in nature, and they are because they are saying कि this is the thing, that there is some intelligent creator behind this universe. So I saw in the atom that the key to deepest secret of nature, and it revealed to me the greatness of the creation and the creator. So this is said by Max Born. So I'll just skip. An equation to me has no meaning unless it represents the thought of God, Ramanujan. So I'll just skip this probably. There are so many scientists who are saying, and believing in some intelligent creator, and it is not coming out of just chance. So there are two questions which I'll ask you. Just write it in the chat. What do you think about it? I want everyone's participation. Whoever is answering, I'll consider those people are only there in the session. Okay. So the first question is for you for 1 crore rupees. That is, what is the origin of the universe? आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से बिग बैंग के थ्रू आया है, बिग बैंग के थ्रू आया है, एक इंटेलिजेंट डिजाइन के थ्रू आया है, या ऐसे ही चांस के थ्रू आया है? So what do you think? According to you, what is the origin of universe? पांच लोग एक्टिव हैं, बाकी लोग 6 लोग एक्टिव हैं. ओके, 7 लोग, बाकी लोग अभिषेक. ओके, ठीक है. सो द राइट आंसर इज सी, राइट? इंटेलिजेंट डिजाइन. हमने इतना सब कुछ देखा कि देयर इज सम इंटेलिजेंट डिजाइन बिहाइंड दिस. एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस होल क्रिएशन? टू ईट, स्लीप एंड जस्ट डाई एंड मतलब जस्ट मजे करो जिंदगी में, या फिर मेक मनी एंड पास अवे एंड नो पर्पस? कुछ पर्पस ही नहीं लाइफ का, लाइफ इज पर्पसलेस, मीनिंगलेस है. या फिर डी, टू अंडरस्टैंड गॉड एंड लाइफ एंड टू understand about all these things, be a thinker to understand कि यार ठीक है ये चीजें कैसे work कर रही है, क्यों work कर रही है, and what do I should care, why should I care about all these things, what is the purpose, right? So D, a lot of people answered. Thank you. So these two things, if you are clear with, a lot of things in spirituality will be clear with, right? Because otherwise हम बहुत घूम सकते हैं. हम पूरा बिग बैंग के ऊपर और पूरा सेशन कर सकते हैं, मैंने पूरा रिसर्च भी किया था, बट आई डोंट हैव टाइम टू शो यू ऑल. आई विल जस्ट probably show you a glimpse out of it, because we are out of time. So if there is a big brain, or there is this big bang which has happened, right? So I'll just probably show you some small snippet of it, so that आपको पता चले, right? So so Big Bang के according अगर आप देखोगे, so if you just go to to the NASA's website, it says that when the universe began, it was just a hot tiny particle mixed with light and energy. It was nothing like what we see now. As everything expanded and took up more space, it cooled down. So tiny particles थे, वो mix हुए light and energy के साथ, और धीरे-धीरे ठंडे हुए. This tiny particles grouped together and formed atoms. Atom बना, atom से फिर stars बना, galaxy बना, molecules बना, and the first star created bigger atoms and group of atoms that led to more stars. और इस तरीके से asteroids बने, comets बने, planets बने, black holes बने. तो मैंने ये नासा के वेबसाइट पे, आप जब रेफरेंस भी है यहाँ पे spaceplane.nasa.gov, तो यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हो. So that is the definition that is given. और फिर I tried to research किया, ठीक है, बिग बैंग क्या बोलता है, लाइफ कैसे आया, how did life created, how did life came into existence.
So I found the article. तो इस आर्टिकल में अगर आप देखोगे, मेरा स्क्रीन शायद पूरा शेयर नहीं हो रहा है. I'll share the whole screen with you. Yeah. So I just tried to find evidence reveals how life was created after Big Bang. So this is from the University of Western Australia. तो मतलब मुझे हंसी आ गई मतलब पढ़ के, but I'll someone what want to read it here. मतलब यहाँ से कोई read करेगा यहाँ से यहाँ तक. Who would like to read? Abhinav? Yes, Yeah. sir. Yeah, Abhinav, you can read. Professor Abrazi said it was fascinating to see the complexity of how the universe might have been formed. Human beings essentially started as hydrogen and atoms and energy swirling around to create other chemicals, and these interactions resulted in life, she said. The creation of life on Earth will always fascinate and challenge us, leaving more questions than answers. But this latest research brings us one step closer to understanding how we came to exist. So ये जो line में लिखा है, how many of you मतलब it makes sense for you? You human beings started as a hydrogen atoms and energy, and धीरे धीरे swirling around chemicals का reaction हुआ, and then this interaction resulted in life. This life where we are interacting, we are having emotions, we are having love, we are having different things, different emotions like care, love, anger, greed. So many different emotions we have. ये बस chemical reactions हो रहे हैं. कितने लोगों को ऐसा लगता है? Right, so Nitin strongly disagrees. Right, so basically we can मतलब ये रिसर्च है 2018 का, जस्ट अभी हुआ है. मतलब हम देख सकते हैं कि यार कुछ भी सेंसलेस चीजें अभी भी चल रही है. मतलब जहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि यार दिस क्रिएशन ऑफ मतलब ये हमें थोड़ा और नजदीक लेके जा रहा है. मतलब दिस शोज हाउ फार आर वी फ्रॉम गेटिंग टू द ट्रुथ. बट श्रीमद् भागवतम, इफ यू रीड द थर्ड कैंटो, it talks about the whole creation, how did this primary creation came about, how the secondary creation came about, how the soul came about, how the different emotions came about, how lust, greed, anger, envy, illusion, pride came about. It is such detailed description. और पूरा womb में जब एक बच्चा होता है उसके पूरे different different stages कैसे होते हैं, that is all described. If you मतलब चलो आपको वो लग रहा होगा, मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ इस brief में. If you open third canto, third या fifth canto, I think fifth canto, right? So you'll find the whole description about Jambu Dweep. You will find the description about the structure of the universe, movements of the sun, orbits of the planets, heavenly planets. And there are a lot of things around in the third chapter also. If you read मतलब उसके अंदर chapter के अंदर आप घुसोगे तो आपको काफी सारी चीजें मिलेंगे. तो पूरा creation कैसे हुआ? There's a very good alternative theory around that, said to us in the Vedas. एक book भी अगर किसी को पढ़ना है, so the Big Bang and the Sages. So modern science catches up with the ancient Puranas, and there is a lot of videos also. If you are interested in this topic, let me know. I'll share you those videos also. There are multiple videos around this particular thing. So ये मैं just देख रहा था, तो research कर रहा था, तो मुझे मिला कि पहले scientists बोलते थे कि there is an eternal universe, but then they said in 1930 they said कि universe is just 10 to 20 billion years purana. Then in 2000 they changed it to 11 to 15 billion years purana hai. Then 2010 में क्या बोला 13.75. Then 2018 में they said 13.80. And in Puranas, with all the statements, Puranic statement, it is said 13.819. So they are almost close now with what is stated in the Puranas. So Puranas में starting से पहले से बोल के है कि 13.819 है. अगर आप श्रीमद् भागवतम में डे ऑफ ब्रह्मा जिस तरीके से पूरा एस्टैब्लिश किया हुआ है और वो सारी चीजों को बैक कैलकुलेशन करोगे, you will understand that the age which is given is 13.81 billion years according to the age of Brahma and Manvantara and all this different calculations that you do. उसके हिसाब से ये है, और साइंटिस्ट लोग भी अभी 13.80 तक पहुंच चुके हैं. So the Puranic date differs just by 0.1% in the latest scientific date.
तो साइंस इज फाइनली कैचिंग अप विद द पुरानास. सो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि जब 1916 में वो लोग बोल रहे थे इटर्नल यूनिवर्स है, तो वो लोग जो बोल रहे थे वो सच थोड़ी ना था, बाद में चेंज हुआ ना, बाद में वापस से चेंज हुआ. अगर आप एटॉमिक थियरी को भी देखोगे, स्टार्टिंग में इट वाज किया ठीक है वाटरमेलन वाला है, रदरफोर्ड वाला है, फिर डाल्टन आया, डाल्टन ने कुछ और बोला, फिर किसी और ने कुछ और बोला, फिर बाद में श्रोडिंगर आया, उसने बोला ये सब गलत है. मतलब पहले एक बंदे ने बोला कि ये है, उसके लिए नोबेल, उसको लो पुरस्कार दो, नोबेल लॉरेट दो, नो गिव हिम द नोबेल प्राइज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रदरफोर्ड गॉट अ नोबेल प्राइज, देन डाल्टन गॉट अ नोबेल प्राइज. बाद में फिर उस बंदे ने बोला ये सबको अवार्ड देने की जरूरत नहीं है, मेरा थियरी सबसे ज्यादा अच्छा है. श्रोडिंगर आया, श्रोडिंगर ने बोला क्वांटम फिजिक्स, तो बोला ये सब बेकार है, ये सब फालतू है, इससे अच्छा मेरा थियरी है. सो रोज चेंज हो रही है चीजें, विच इज ऑल्सो गुड. वी आर नॉट सेइंग साइंस इज बैड, साइंस इज गुड, वी शुड डू रिसर्च, बट द थिंग इज फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स we cannot rely on science, as one of the scientists said, right? I think किसने बोला था वो, श्रोडिंगर ने बोला था, right? कि for a lot of things science doesn't have an answer because we are limited. हम अभी एक पर्टिकुलर यूनिवर्स के बाहर या फिर हम हमारे गैलेक्सी के बाहर नहीं देख पा रहे, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट गैलेक्सीज का पूरा क्लस्टर होके सुपर गैलेक्सीज है, एंड उस सुपर गैलेक्सीज के क्लस्टर होके पूरा एक यूनिवर्स है, और उसके बाहर भी बहुत सारे यूनिवर्सेस हैं. दैट इज सेड इन द श्रीमद् भागवतम. सो हम कब तक वहां पे जाएंगे, और कब तक ये लोग हमें पर्पस बताएंगे कि लाइफ का पर्पस क्या है. इफ यू सी गोइंग डीप डाउन, whatever we are doing technologically today, हम blockchain बना रहे हैं, artificial intelligence बना रहे हैं, हम whatever we are doing, what is the end goal that we are trying to achieve? To simplify human life at the end of the day, right? मतलब एक दिन वैसा आएगा कि जहाँ पे हम बेड पे लेटे हुए आराम से, एलेक्सा चल रहा है, एलेक्सा को बोल रहे हैं स्विगी से ऑर्डर करो खाना, लाइट बंद करो, लाइट चालू करो, खाना लाके दो, रोबोट आके आपको खाना खिलाएगा हाथ से, आपको हाथ से खाना खाने की भी जरूरत नहीं है. एलन मस्क का भी नया रोबोट अभी टेस्ला ने लॉन्च किया है, राइट, रिसेंटली, अगर आपने देखा हो. So that robot, can hold plates also very nicely. So it would feed you. So आपको मस्त लेटना है और कुछ नहीं करना है. That is the life that we want. And will we be really happy with that? That is the question. So I am just leaving you with a question mark, because ये सारे answers हमें in further sessions मिलेंगे, because we cannot cover everything in a day, right? Because आपने साइंस को पढ़ने के लिए इतना टाइम लगाया, पूरा 12th स्टैंडर्ड तक आप साइंस पढ़े, और रोज क्लासेस लगानी पड़ती थी, कोचिंग क्लासेस, बुक्स पढ़ने पड़ते थे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते थे. सो टू अंडरस्टैंड बियॉन्ड साइंस, हाउ मच टाइम वुड इट टेक, एंड हाउ मच टाइम आर वी रियली इन्वेस्टिंग. अगर हमारे लाइफ में हम देखें तो मतलब अगर प्रोबेबली इफ यू सी एवरेज एज ऑफ ईयर वुड बी 20 years, और आपने अगर 20 years में 365 डेज होते हैं, राइट, और उसमें 24 hours होते हैं, इतने घंटों में से आपने कितना घंटा स्पिरिचुअलिटी में दिया है? दैट इज 1,75,000. How much time have we given to spirituality to understand all these things? And कब टाइम मिलेगा हमें? आज नहीं तो कब? हम सोचेंगे कि बुढ़ापे में करेंगे, तो बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा, because then we won't have this brains to understand all these things, all this magnanimity, and they're just so interesting topics. मतलब यहाँ पे you'll get, अगर आप deep में जाओगे, you have so many different things to explore. I have a book on cosmology. There's a book, मतलब उसमें पूरा there's a description how this nakshatra works, how this different things works, and very scientifically. So all these things are not just bogus things, just coming out of anything. These are practical things which are there, right? ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, conclude करते हैं, otherwise we'll never end. 45 हो गया ना, I think. Okay, sorry for the delay, but hold on with me for next 5-10 minutes. I'll just probably wind up. So okay, so basically it should be emphasized that no theory of the origin of the solar system has yet won general acceptance. किसी ये encyclopedia में लिखा हुआ है, all involve highly improbable assumptions, and lot of them are just assumptions, mere assumptions, nothing more than that. Yeah, Erwin is Schrodinger only. Erwin Schrodinger is his full name. Okay, so just a short activity time. I'll just skip this maybe probably. So if you compare, so I just want to talk about this thing around कि ठीक है, जिस तरीके से आपका होम मिनिस्ट्री है, right, उसी तरीके से आपका you have this whole thing of, I'll just reshare the screen. Yeah, so as you have this home ministry, there is law and order, there is punishment and everything. जेल होता है, जुडिशरी सिस्टम है.
उसी तरीके से नेचर का भी एक तरीका है टू गिव गुड थिंग्स टू द गुड पीपल, एंड मतलब आपको शाबाशी देना when you're doing right things, and आपको punish करना when you're not doing wrong, when you're doing when you're on the not on the right path, right? So nature has also wonderfully designed the systems. So अगर आप illicit sex करोगे, going with multiple women, then you will have AIDS. If you do a lot of smoking which is not good for health, then you will turn up with cancer. हर सिगरेट के पैकेट के आगे लिखा होता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और उसका फोटो भी दिया होता है, हर मूवी के सामने भी चला जाता है, बट कितने लोग समझ पाते हैं? हमें पता है कि गलत है, फिर भी हम कितने लोग रोक पाते हैं उस चीज को? ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, लिवर डैमेज होगा, राइट? एंड इसके वजह से हेल्थ सिस्टम में कितना कितने लोग हॉस्पिटल्स में होते हैं, इफ यू सी, राइट? तो यूनिवर्स ऑल्सो अगर आप ज्यादा गलत चीजें करोगे तो आपको बीमारी होगी। ये सिस्टम बनाया है नेचर ने ऑटोमेटिकली, एंड इस तरीके से हेल्थ मिनिस्ट्री इज देयर। सो बेसिकली हियर इट इज सेइंग कि यार आपके पास आयुर्वेदिक हर्ब्स है फॉर ईच एंड एवरी मेडिसिन और एवरी डिजीज दैट यू हैव। देयर इज वंडरफुल मेडिसिन आउट देयर इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदिक। इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम बट इट इज परमानेंट एंड लास्टिंग सोल्यूशन। अगर आपने आयुर्वेदिक सोल्यूशन या आयुर्वेदिक मेडिसिन लिए तो आपको पता होगा, मैंने बचपन में लिया था, मेरे को कुछ था, तो इट क्रिएटेड lasting impact and that disease never came in again. But अगर आप आज के medicines लोगे तो that is a temporary solution for that thing। क्या फटाक से आपने सर दर्द हो रहा, आपने वो दवाई खाया, but that is not a permanent solution, and वो उसका side effects होते ही होते हैं कुछ ना कुछ, right? Ministry of Energy is there, electricity and lightning. So similarly you have light, for light you have sun and moon. भगवान डायरेक्टली आपका लाइट चालू कर देता है सुबह पूरे दुनिया के लिए, और लाइट बंद कर देता है, डिम कर देता है जब राइट हो जाता है। मतलब जैसे हम लाइट स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करते हैं, नाइट लाइट चलाते हैं, उस तरीके से सन और मून बनाया है, इतना परफेक्टली बनाया है हर चीजों को, राइट? एंड एवरीथिंग इज गवर्निंग सो वंडरफुली एवरी डे। फाइनेंस मिनिस्ट्री इज देयर, similarly in the older days we have to have gold and silver and everything. We have defense ministry, similarly we have this ozone layer, जो आपको जो गलत चीजें आती हैं उस पूरे सनलाइट से, जो हार्मफुल रेडिएशंस आते हैं सन रे से, वो बचाने के लिए ओजोन लेयर बनाया था। बट हमने सीएफसी गैसेस बनाए, हमने रेफ्रिजरेटर्स बनाए, हमने एसीज बनाए, और उससे हमने वो सीएफसी गैसेस से हमने ओजोन लेयर को फाड़ दिया, बोला कि हमें जरूरत नहीं है डिफेंस की। और फिर दैट इज व्हाई वी हैव सनबर्न्स एंड वी हैव सो मेनी डिफरेंट डिजीजेस व्हिच आर कमिंग, व्हिच वाज नॉट देयर अगर आपका ओजोन लेयर नहीं डिप्लीट होता तो, राइट? वी हैव इम्यूनिटी इन आवर बॉडी टू सेल्फ डिफेंड लॉट ऑफ बीमारी, राइट? तो ये सारी चीजें हैं आपके नेचर में जो भगवान ने ऑटोमेटिकली बनाया। वी हैव एजुकेशन मिनिस्ट्री, सो सिमिलरली वी हैव वेदास, वी हैव बाइबल, वी हैव कुरान to read and understand about and educate about ourselves for the purpose of life and everything, right? So lessons we can learn from the universal government. So behind every government there is a prime minister. So similarly we have so behind every universal government there is a god. So that is the first takeaway. The prime minister maintains and controls the country, right? So similarly God maintains and controls the universe. अब वो God कौन है वो हम probably discuss करेंगे आगे, but that let's assume कि वो कोई ना कोई है, right? There is some super intelligent person. Government law abides live happily and lawbreakers are punished. Similarly God law abiders are living prosperously and lawbreakers suffer. तो जो अच्छे से रह रहा है, क्लीन लाइफ रह रहा है, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग कर रहा है, he doesn't, मतलब गांव में आप देखोगे लोगों को ज्यादा बीमारी नहीं होती है, they are very healthy because they are living abiding by the laws of nature. But आजकल लोग गलत आदतों में हैं, गलत चीजें खा रहे हैं, गलत चीजों में पड़े हैं, जंक फूड खा रहे हैं, so you are getting against the nature, you are not eating what is there in the nature, and that is why we are breaking the law and we are suffering, right? So concluding with the last slides almost. So yeah, God is like, in it's he says in the Bhagavad Gita that matta paratam nanyat kinchit asti dhananjaya mai sarvamidam prottam sutramani ganaiva. So he says, oh Arjuna, everything rests upon me as pearls strung on a necklace. तो जिस तरीके से आपको नेकलेस में वो पूरा जो मनी के पीछे वो एक स्ट्रिंग नहीं दिखता है, बट वो स्ट्रिंग होता है, बिकॉज दैट इज द थिंग विच इज जिसके वजह से पूरा स्ट्रिंग साथ में है, राइट? बट वो आपको दिख नहीं रहा है, बट दैट इज देयर. सो सिमिलरली इट इज ही इज अनसीन, बट ही, मतलब आप बहुत सारी चीजों से
समझ सकते हो that is a creator, artist, maintainer, energetic. ये सारी चीजें समझ सकते हो. There is someone who is kind of doing it. It is not happening by chance. There is an intelligent creator behind this, right? So what is our prime duty? So our prime duty is to use our intelligence, जो हमने भगवान ने intelligence दिया है, to appreciate the creation of the God. We should have an appreciation and gratitude. या कितना अच्छा perfectly पूरा creation बनाया भगवान ने. To unfold the mysteries of God creation through science to glorify God. और साइंस में हम थोड़ा और डीपर जा सकते हैं, समझ सकते हैं एंड ट्राई कर सकते हैं टू अनफोल्ड ऑल दिस मिस्ट्रीज. वी कैन डू रिसर्च अपॉन दिस टॉपिक्स, इनटू प्रूविंग कि यार वेदास में जो लिखा है ये लिखा कितना कोरिलेट कर रहा है वो दोनों चीजें. To understand and explain the purpose of Lord's creation, which is to love and love God and love all. To understand the purpose of Lord's creation. ठीक है, बनाया तो बनाया, but बनाया क्यों? Right? So there are different types of philosophies. हमने जैसे डिस्कस किया, राइट? तो मेटाफिजिक्स में बात होती है या फिर ऑन्टोलॉजी या कॉस्मोलॉजी में बात होती है कि क्या चीज है, व्हाट इज रियल. बट ऑन्टोलॉजी अगर आप स्टडी करते हो तो उसके अंदर, सॉरी थियोलॉजिकल आप स्टडी करते हो कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट. सो दैट इज अ थियोलॉजिकल अप्रोच टू अंडरस्टैंड द इंटेलिजेंट डिजाइनर, राइट? सो थियोलॉजिकल में हम लोग ये देखते हैं कि rather than understanding the explanation कि why it is happening, we are trying to understand why, what is the purpose. अगर पृथ्वी गोल घूम रही है तो क्यों घूम रही है? अगर हम यहाँ पे 60 साल जी के मर जा रहे हैं तो क्यों मर रहे हैं? उसके बाद क्या होता है? क्यों होता है? ऐसे ही क्यों होता है? हम अमीर पैदा हो रहे हैं, गरीब पैदा हो रहे हैं, तो वो उसका रीजन क्या है उसके पीछे का? What is the cause? That is the theological study that will probably understand in the further sessions. So आगे हम सीरीज ऑफ सेशन जो है हमारे उसके अंदर हम we'll understand about more about laws of karma and a lot of things. If there is one God, then why so many religions and everything? So we'll understand in those topics. So to utilize everything for the pleasure of God and welfare. So जो भी चीजें हैं हमें उसको utilize करना चाहिए for the pleasure of welfare of other peoples and God, and not just be selfish for our needs only. That is our duty. So you can take a screenshot and try to abide by these principles, right? Okay, so in summary, we discussed about artistry. Art. If there is an art, there is an artist. If there is a beautiful organizer, there beautiful organization, there is an organization. There is a creator. There is a if there is a creation, there is a creator. If there is a wonderful designs, there is a designer. If there is energy, there is energetic. If there is laws, then there is a lawmaker also, right? And then we understood about some of the scientist observation. काफी सारे scientists के हमने quotes देखे, references देखे. Then we understood about $2 billion question: who created the universe and what is the purpose. Then we saw about the national government versus the universal government. We saw the correlation, and then we saw about the prime duties, the 4 duties that we should do. So this is the mind map of this whole session. You can probably take a snap of this, and probably this will probably share also to you all. Personally, whoever attended the session only. Okay, so thank you so much for staying till the end, and we have a few more things to discuss, but yeah, probably we can discuss it sometime next. Big Bang के बारे में काफी चीजें और थी. Okay, I'll just also share you one more thing, just on the closing note. So so there are very better alternatives, Vedic alternatives, to the whole creation thing, to this whole consciousness thing. And there are a lot of wonderful books which are written. So there is this Prabhupada disciple, Srila Prabhupada, who has written Bhagavad Gita as it is. So unke ek disciple the foreign disciple the Sadaput Prabhu. So he was a PhD from Cornell University. Cornell University is one of the Ivy League University of USA, and he was a disciple of Srila Prabhupada. And his real name was Richard L. Thompson, and he has written a lot of wonderful books: The Sacred Universe, Vedic Cosmology and Cosmography and Astronomy, Maya. ये उस टाइम पे लिखी थी इन्होंने, 1980s 1990s में ये सब लिखी हुई है इन्होंने बुक्स. ये अभी की बुक नहीं है. माया, द वर्ल्ड एज अ वर्चुअल रियलिटी, गॉड एंड साइंस, पैरेलल्स, भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट, गॉड एंड साइंस. So there are a lot of wonderful books that have been written, and जो हमने श्रीमद् भागवतम या अलग अलग वैदिक स्क्रिप्चर्स में है, उस चीज को कंपाइल करके हाउ कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल मीनिंग एंड पर्पस, हाउ दिस होल क्रिएशन केम अबाउट. And then there's another disciple also. He was also a scientist, T.D. Singh.
later he became a Swami. So his name was Bhakti Swarup Damodar Swami. But he was a director of Bhaktivedanta Institute. So there is a research institute also in ISKCON, which studies from the Vedic scriptures and this Bhagavad Gita and everything. मतलब Vedic scriptures और जो science में दोनों को around parallels draw करते हैं कि how what are things, right? How are these two correlated, right? So there are a lot of books about life and matter, Nobel laureates on science and spirituality, God is a person or not, reflections a lot of about the Nobel laureates. So there are a lot of books written by him also. So there are a lot of other things which you don't know of are there for us to explore, but we are not exploring because we don't know about them. So that is what we are trying to probably try to make you all understand from this kind of sessions. So I hope you understood a lot of things from this session, and I think that you could apply some things from this session. Thank you so much.